हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को फेरिंग्स एंड इसोफेगस के बारे में बताएंगे। इसकी पिछली क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स पढ़ चुके। अब ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे फेरिंग्स। द फेरिंग्स इज अ वाइड मस्कुलर ट्यूब situated behind the nose, the mouth, and the larynx. The cavity of the pharynx is divided into 3 parts: nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. This is the structure of pharynx. This is nose, and behind the nasopharynx this is mouth, and this behind the oropharynx, and just larynx is behind the laryngopharynx. 3 parts. This is 3 parts of pharynx: nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. Okay. The nasopharynx is concerned with respiration. The oropharynx and laryngopharynx are connected with digestive system. The food passes from mouth into esophagus through pharynx. जो फूड होता है पास होता है माउथ into esophagus through pharynx. With the wall of the pharynx consists of 3 layers. First, mucous layer. Third is second, submucous layer, and third, the mucous layer. First, the mucous layer. It is the innermost layer. It consists of stratified squamous epithelium. It continues with the mouth and esophagus. Second, submucous layer. It is the middle layer of the middle layer. It consists of fiber tissue. It contains blood vessels, lymph vessels, and nerve. Okay. Third, submucous, the mucous layer, submucous layer, and third mucous layer. It is the outer layer. It consists of 3 constrictor involuntary muscles with help in sorting. The passage of food through pharynx is involuntary. Blood supply. The branch of external carotid artery and facial artery supplies blood to pharynx. The drainage of blood is into the internal jugular and facial vein. Nerve supply. The pharynx is supplied by the pharyngeal plexus of nerve. This plexus is formed by vagus and glossopharyngeal nerve. It provides parasympathetic nerve supply. The sympathetic supply is from the cervical ganglia. Okay. अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसोफेगस के बारे में. This is esophagus. This picture is esophagus. ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट है और ये डायफ्राम है, और ये स्टमक तक ये
इसोफेगस यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक इसका एंड होगा, ठीक है। दिस इज एओर्टा, दिस इज इसोफेगस एंड दिस इज ट्रेकिया, लेफ्ट ब्रांचेस, राइट ब्रांचेस and diaphragm, and this is inferior vena cava. The esophagus is narrow muscular tube forming the food passage between the pharynx and stomach. It ends from the lower part of the neck to the upper part of the abdomen, lower part of the neck and to the upper part of the abdomen. The esophagus is about 25 centimeter or 10 centimeter long and 2 centimeter is diameter. The tube is fractionated atrio-posteriorly and the lumen is kept collapsed. It dilates only during swallowing. The upper and lower end of the esophagus are controlled by a sphincter. The upper cricopharyngeal sphincter and prevents air from passage into the esophagus during inspiration. The cardiac or lower sphincter pharynx esophageal sphincter prevent the reflex of acid gastric content into the esophagus. The esophagus continues above the lower end of the pharynx and below the stomach. It descends in front of the vertebral column. The relation of thoracic part of the esophagus: anteriorly trachea, posteriorly vertebral column, and the right lungs and pleura, and left lungs and pleura. Structure: the esophagus consists of 4 layers of tissue. Already discussed the beginning of the chapter. The outer covering of the adventitia or serosa. Second, the second layer of muscularis, and the third submucosa layer, and fourth, the mucous layer. Blood supply. Atrial blood supply. The cervical part of the supplied by the inferior carotid arteries. The thoracic part of the supplied by the esophageal branches or the aorta. The abdominal part of the supplied by the esophageal branches of the left gastric artery. Venous drainage. Blood from the upper part of the esophagus drain into the brachiocephalic vein from the middle part of the goes to the zygous veins, and from the lower end it goes to the left gastric vein. Nerve supply. The esophagus is supplied by the both parasympathetic and sympathetic nerve. तो इस प्रकार हमने आज देखा कि
फेरिंग्स और इसोफेगस के बारे में। और इसका जो मेन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द माउथ, फेरिंग्स एंड इसोफेगस, तो फॉर्मिंग ऑफ बाउल्स, ये माउथ का फंक्शन होता है। एंड सेकेंड डेगुलेशन और सॉलिंग, यह जो भोजन हम जो चबाते हैं मुँह से, उसको अंदर निकलने का कार्य करता है इसोफेगस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने अभी देखा है फेरिंग्स के बारे में। एंड उसके बाद इसोफेगस की लेंथ कितनी होती है और कहाँ से कहाँ तक ये होती है, और इसके क्या फंक्शन होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, और ये कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है, और इसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, एंड लास्ट में इसके फंक्शन के बारे में। थैंक यू।